ऑलराइट भाई लोग, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल। यार आज हमारे साथ हमारे तीन साथी जुड़ चुके हैं फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन आवर चैनल। विनायक भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाय भाई। एंड वी आल्सो हैव अदिदेव गुरु ओवर हियर विद अस, एंड शिखर भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या हाल है भाई लोग, कैसे हो सब लोग? एंड कैसा रहा आज का दिन? प्लेंटी ऑफ फुटबॉल हमने देखा, मैनचेस्टर यूनाइटेड को हमने देखा हगते हुए, हमने मैनचेस्टर सिटी को देखा चेल्सी को हगाते हुए। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे गाली मत देना, बट बड़ा ही अच्छा दिन था यहाँ पे फुटबॉल का गाइस। सो वेलकम ऑन द स्ट्रीम यार, कैसे हो सब लोग? बढ़िया भाई। बस आज तो यार बढ़िया फुटबॉल का दिन था। आज तो मजा आ गया। फिर यूनाइटेड के सीरियस साथ भी हुआ सीरियस जो हुआ, ठीक है। ठीक है। रात आ गया। अधिदेव से शुरू करूंगा मैं बस। आई जस्ट वांट टू आस्क भाई, योर फीलिंग, योर रिएक्शन, मतलब व्हाट द हेल इज हैपनिंग विद चेल्सी? प्रॉब्लम्स डीप डाउन आ रही है, ये सिटी के गेम में लिटरली आउटप्लेड, इंजरीज, मैं कोविड, व्हाट्स द थिंग? नॉट एग्जैक्टली दैट इज वेल। मैं यही बोलना चाहूंगा पहली बात कि सिटी के अगेंस्ट अगर हम अगर पॉजिटिव भी हो रहे थे अगेंस्ट सिटी इन अ मैनर की प्रीव्यू में, अगर किसी ने कोई भी अगर पॉजिटिव हो रहा था फॉर गुड रीजंस, वी आर चेल्सी फैंस, वी if you are a club fan you are positive about something in the end. Yeah. But to be very pragmatic about it, if I'm being very pragmatic about it, मैं उतना सही से मैंने बस बोला कि पॉइंट लेके चले जाते हैं इस गेम से, ठीक है। वो मेरे सीन में था कि दिमाग में पॉइंट लेके चले जाते बस, ठीक है। एंड we adopt a little bit more positive approach than what we did in the previous fixture, in the previous Premier League fixture against City at home at Stamford Bridge. तो वो मेरे दिमाग में था। Now coming to this game, when जब मैंने देखा शुरुआत के 10 मिनट हम थोड़े पॉजिटिव इंटेंट के साथ डेफिनेटली खेले थे, ठीक है। पर द थिंग इज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट्स लाइक सिटी का, मैंने ये चीज देखी है सिटी के गेम प्ले में भी देखी है, सिटी सक्स यू इन, ठीक है। लाइक ड्यूरिंग अ गेम सिटी सक्स यू इन, ठीक है। दे गिव यू फॉर द फर्स्ट फ्यू मिनट्स समथिंग, दे गिव यू दिस वाइब दैट यू आर इन कंट्रोल बट यू आर नेवर इन कंट्रोल, ठीक है। It's just that attitude that they display on the pitch tactically as well and mentally as well. This is what they did Kevin De Bruyne's goal as well. They sucked us in their own half, then Joao Cancelo ka ek long ball in that half, in that channel, and that's where Kevin De Bruyne did what he does best, okay. So this is something that City does in abundance. Now where we fell flat was just football basics. Football basics, first touch, ठीक है, होता है फुटबॉल कोचिंग, फर्स्ट टच लेवल 1, फर्स्ट टच बेस पासिंग, ठीक है, कंपोजर, ठीक है, मलांग सार, हाँ मलांग सार, सिंपल पासिंग मलांग सार। I mean the first half was probably one of the worst center back performances I've seen in the first half by a Chelsea player. That was Malang Sarr. लोग कह रहे थे कि नॉर्विच में भी आउट ऑफ प्लेस नहीं लगेगा मलंग सर। हाँ, so because previously भाई, to be very honest, वो टॉटनहम के अगेंस्ट जैसा खेला था, I mean Malang Sarr, the game that he played before this, he was very good. He was very very good, ठीक है। He was pretty solid in that in that 4-man system at the back, ठीक है। But the thing is कि it's I'm not blaming the system also for Chelsea. It's just that we could have got a point out if we could have got our basics right, okay. But I'm still not too disappointed. I was devastated at the final whistle, but after some time I realized kiya I'm not too disappointed because we went away to City, हमने बस एक गोल concede किया, and that too by a Kevin De Bruyne, freaking like master class, ठीक है, and हाँ freaking banger, and we left. So I'm not too disappointed. But when you look at it, when you look at it, it is just a single goal conceded, but it was a totally shambolic performance. Like when you said dominant performance, dominant basics गलत कर रहे हैं, touches नहीं आ रहे हैं, players are not able to find Lukaku's run. कहीं ना कहीं चेल्सी की कुछ ये भी प्रॉब्लम थी कि वो इतना एम्बिशियस नहीं थी, आप सिटी की तरफ जाते। पॉजिटिव इंटेंट तो था नहीं, इंटेंट तो था नहीं, मैं तो वो मना ही नहीं कर रहा, इंटेंट था ही नहीं, ठीक है। थोड़ी बहुत इंटेंट मुझे मिडफील्ड से कोवाचिच की दिख रही थी, थोड़ी सी इंटेंट, ठीक है। एंड आई वाज सरप्राइज्ड दैट व्हेन आई एम रीडिंग, जब मैं वॉच लॉन्ग गया था बाबा के चैनल पे, मैं सरप्राइज था सम पीपल वर एक्चुअली सेइंग ऑन द इन द कमेंट्स कि
Kovacic should be substitute for Jorginho. अरे why should Kovacic be substitute for Jorginho? Right. तुम गेम देख रहे हो फर्स्ट हाफ में. He's one of the better players. He's the guy who's breaking the ranks, who's हाँ, running, जो splitting runs डालता है सिटी के डिफेंस के थ्रू. लाइन ब्रेकिंग पासेस Exactly. वही तो कर रहा है. मतलब 2-3 लाइन ब्रेकिंग पासेस उसने ही तो क्रिएट किए Yep. थे. एंड लुकाकू को भी तुम अगर स्केपगोट बना रहे हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट लुकाकू वाज एलियनेटेड फॉर Yeah. मोस्ट ऑफ द गेम. बट यस, मैं ये भी नहीं. who should be He's a liability with back towards the goal. मतलब Yeah, I mean, हाँ, that's the statement. हाँ, I'm saying he could have been a hold up play उसका better हो सकता है. I'm not doubting it, but he was not the worst player on the pitch. ठीक है, you can't definitely लेकिन say that Stones and Laporte did a very fantastic job on Lukaku because जितने भी aerial balls throw हो रहे थे पीछे से, which Lukaku was supposed to win. I didn't see him win a single ball against Aymeric Laporte. Rodri was even capitalizing on those long balls जो वो rise करके headers win कर रहे थे. Chelsea progressing from the back, build up play बहुत smooth, बहुत ही सुंदर. But when they found that man and they were wanting to go long, वो जब लॉन्ग जा रहे थे वहां पे that's the point they were messing it up because वहां पे उनकी लॉन्ग बॉल्स wasn't spot on and already सिटी के प्लेयर्स अपने पोजीशनिंग से they were already covering that space. So distribution wise even building from the मैं तो ऐसा मेरे को नहीं लगा कि चेल्सी कभी भी ऐसे बिल्ड इतने कंफर्टेबल मेरे को एक मोमेंट याद नहीं है राइट बैक राइट वाले विंग साइड डाउन डीप राइट बैक पोजीशन पे कॉम्बिनेशन बनाया था उन्होंने. हाँ, कॉम्बिनेशन प्ले हुआ. हम निकले बॉल लूज. ठीक है, हम निकले बॉल लूज. ठीक है, बट अगर तू लेफ्ट में तो भाई छोड़ ही दे. मैं लेफ्ट की इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज अगेन मलंग सर. तो देयर वर 2 or 3 इंस्टेंसेस वेयर आई डोंट नो हु ही वाज सीइंग. ठीक है, मतलब कौन है उधर. ठीक है, he tried to ping a ball to the left wing back when there was no left wing back. ठीक है, and I am happy that Kyle Walker didn't make those overlaps. ठीक है, to trouble Alonso. If he would have done that, no, it would have been 3-0. It would have been 3-0. Easy. कह सकते हैं कि सिटी भी थोड़ा ज़्यादा एक सेफ गेम खेल रही थी because उनको भी पता है कि Chelsea can hurt them. So they weren't putting so many men forward. अगर Kyle Walker को भी हम forward डाल देते, could have exploited that. Because जब Timo Werner आया and Callum Hudson-Odoi आया, it was very evident कि what Chelsea is wanting to do, be more direct. और ज्यादा अटैक करना फ्लैंक्स के थ्रू. बट वो भी नहीं हो पाया. मुझे ऐसा लगता है कि सब्स्टिट्यूशन होने के बाद भी आई डोंट थिंक सो कि 20 से ज्यादा टचेस होंगे इंडिविजुअल इन दोनों प्लेयर्स के. नहीं थे ऐसा कुछ नहीं था. एंड as I mentioned, we lost to a better team and it doesn't actually impact our chances as well because I was not looking at us as title contenders, to be very honest, before this game. ठीक है. अच्छा, before this game, Adidev bhai, before the Premier League started, let me tell you, मेरी prediction थे Chelsea winning the league. Chelsea winning the league. Cockiness we all remember. Before this game, ये अभी कमेंट किया. अच्छा, and I remember मैं बहुत कॉकी था. ठीक है, us we were very cocky at the beginning of the Premier League. ठीक है, we were very cocky that Chelsea blah 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 blah. पर at a point of time we also conceded that it also depends on mentality monsters. Who are the mentality monsters in the Premier League? There are 2 teams, Liverpool and Manchester City. Okay, when it comes to mentality monsters, all right, and this is where we can't compete. This is where we can't compete at all. Okay, and this is a आपको नहीं लगता ये थोड़ा वैसा रिडक्टिव स्टेटमेंट है लाइक? क्योंकि आई थिंक कि वैसे देखा जाए तो दिस इज अ फुटबॉलिंग प्रॉब्लम लाइक सेइंग कि ये मेंटालिटी सिटी इज बाय फार लाइक इट्स सिटी इतने दूर है ना अभी कंपेयर टू एवरी अदर प्रीमियर लीग टीम इन टर्म्स ऑफ जो फुटबॉल खेलती है. इट्स नॉट कि उनको समझ लो उनको मेंटालिटी मॉन्स्टर वाला वो मेरे को कहीं सीन समझ नहीं आता. They are just better. Yeah, they are just better. Yeah, I'm not denying that. Better in every aspect. Spending the money the right way. Money spend करना सबसे ज्यादा डाउनग्रेडिंग चीज है आजकल फुटबॉल में. सब लोग कहते हैं ऑल मनी आ गया. They are just spending money. But आप प्लेयर लाते हो, you have to work with them. You have to make them play. वरना ऐसे तो भाई PSG हर चैंपियंस लीग जीते. एंड यहाँ पे सिटी पेप गोर्डला को डेफिनेटली क्रेडिट देना चाहिए. आज मैंने एक वीडियो बनाया मॉर्निंग में जिसमें आई वाज सेइंग कि पेप गोर्डला के बारे में पर्टिकुलरली बात किया जिसमें द डिसरिस्पेक्ट ही गेट्स जस्ट बिकॉज ही इज स्पेंडिंग. भाई बाकी टीम में भी स्पेंड करी, चेल्सी ने भी स्पेंड किया, बार्सा ने तो बथेरे स्पेंड किए, बट स्पेंडिंग डजंट मेक यू अ वीक मैनेजर. The way you use your players. Jack Grealish again after game में he was in and out ऐसा मुझे लगा था. Rudiger was doing a very good job on Jack Grealish particularly, but then overall as a team not that bad. हाँ मेरे को Grealish अच्छा लगा ऐसे टू. मुझे स्टर्लिंग बेटर लगा फर्स्ट हाफ. Sterling for me Sterling was the best player on the pitch for me.
ठीक है, स्टर्लिंग वाज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच। ग्रीलिश का तो यार पहला सीजन है, इवन फर्स्ट सीजन में, सिटी के फर्स्ट सीजन में रॉड्री आल्सो डिडंट हैव अ ग्रेट सीजन। Yeah, absolutely. Definitely. So But look at him right now. Look at him right, exactly. It's too early to judge Grealish in that zone, to be very honest. But I think And कि भाई मेरे को तो ग्रीलिश काफी अच्छा लगा, like I remember first half में जो चीज सिटी सही कर रही थी वो थी कई बार आउटलेट्स ढूंढना चेल्सी के पीछे, चेल्सी के साइड में वगैरह वगैरह, तो उसमें बस ग्रीलिश था, द ओनली गुड आउटलेट दे हैड इन द फर्स्ट हाफ, बस ग्रीलिश। कैंसेलो वाज कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग हिम और वो उसमें अच्छा काम कर रहा था, रूडिगर को आप वाइड पुल करना, वो सब काम करना, तो आई थिंक कि ग्रीलिश उस मूविंग लाइक व्हाट ही वाज एक्सपेक्टेड टू, हाँ, तो ही वाज वेरी गुड। What about Phil Foden? Phil Foden का गेम हाँ थोड़ा ऐसा पैसेंजर, थोड़ा सा not that good, right? थोड़ा सा कम, but the thing is not operating in the zone he's meant to operate in. But the thing is, when it came to pressing us, right, Phil Foden was a live freaking wire. Yeah, ठीक है, मतलब उसको तुम भागते हुए सामने से, तुम नॉर्मली एक प्लेयर हो, हाँ तुम नॉर्मली एक प्लेयर हो, सामने से देख लो कि फिल फोर्डन ऐसे तुम्हारे साथ दौड़ रहा है, intimidating है। As I said, composure. We used to lose composure every fucking time. But you see that confidence issue है काफी। Sorry, क्या बोला शिखर भाई? काफी confidence issue है with Chelsea team, and they have been done bad by FA2 कहीं ना कहीं, and injuries. Yeah, let me get back to this point of that football basics यहाँ पे, because that is a very very beautiful point to talk about, because हम tactics and बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बात करते हैं, but we occasionally forget about those small little things in football which change game, and खासकर when you watch Dembele on a regular basis, you know how much important that first touch is, right? So even अरे पता है ऐसे, एक मिनट विनायक, just let me complete this, कि जो बात यहाँ पे अदिदेव भाई ने बोली कि जो simple basics, the touches जो गलती करती चेल्सी, but वही उसी का just vice versa उल्टा आप देखोगे, City was phenomenal. The touches of Joao Cancelo. I mean, I'm a footballer. I play football, and being on the line, जब आपके पास एक ऊपर से बॉल आता है and the player is running towards you, it is very difficult to touch the ball and control it right over there. And ये सारी चीजें अगर आप ये touch perfect कर लोगे ना, फुटबॉल में first touch is the best way to defend, to attack a player. आपका first touch perfect रहा, you already have got 3 seconds advantage against that player. आप perfect pass choose करोगे, and you see that happening with Joao Cancelo on the left. You see that Sterling doing that same thing on the right hand side as well. Bernardo के बारे में तो come on, we haven't even talked about touched Bernardo Silva's performance. Literally he was everywhere भाई. नहीं, बर्नार्डो सिल्वा तो यार वो he has been like that पूरे सीजन ऐसा ही रहा है, फुल सीजन ऐसा ही एक गेम फॉल्स नाइन खेलता है, मैन ऑफ द मैच लेता है, फिर अगला गेम डबल पिवट खेलता है, मैन ऑफ द मैच लेता है। And even there are times when the center back, when the defensive line is higher than Bernardo Silva in defensive transitions, there are times like that as well in games. So it is भाई बर्नार्डो सिल्वा के बारे जितना बोला उतना कम है। I think मैंने दूसरे वीडियो में भी और एक कोई वीडियो में मैंने बोला था कि बर्नार्डो सिल्वा is my man to watch for this particular game, ठीक है, and I think he didn't prove me wrong, ठीक है। So that is one thing, and मैं just rewinding back to विनायक जो बोल रहा था कि मतलब मेंटालिटी के बारे में जो बात करी थी, so I think what I meant was in terms of City itself, ठीक है, what I meant was एक विनिंग मेंटालिटी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है टीम के लिए, इन माय ओपिनियन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है टीम के लिए, एक चैंपियनशिप मेंटालिटी जो होती है व्हेन इट कम्स टू अ सर्टेन सेट ऑफ प्लेयर्स दैट यू पिक, अ सर्टेन सेट ऑफ प्लेयर्स दैट यू आर प्लेइंग फॉर द टीम एंड द कोच दैट who is also managing you in that aspect. I'm not saying Tuchel is a bad coach, I'm saying Tuchel is an absolutely beautiful man manager, ठीक है, he's an absolutely beautiful man manager. In game में he's also very good. This I will not fault him for what happened in this particular game. It's just completely, it's an absolute masterclass of performance. I'm City, you can't do much about it. But when it comes to regular games, when it comes to regular championships, I feel कि भाई Pep Guardiola and that particular team, Klopp and that particular team, when he has his first team, ठीक है, when Klopp has his first team, ठीक है, जब साला माने सब है उसके पास, ये सब मीना मीनो वाले लोग नहीं, ठीक है, ठीक है, तो as I'm talking about when he has first team, right? These two teams are what I call the definition of, at least in the Premier League, mentality monsters. You may also want to include that Hansi Flick's Bayern Munich. Exactly, Hansi Flick's Bayern Munich falls into that category. Bracket. Exactly, that you need a set of players who go into that ambition. जो भी रोनाल्डो ने भी जो ऐसा इंटरव्यू दिया था कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को वो थर्ड प्लेस से नीचे वो फेलियर मानता है वो सीजन को, ठीक है, that kind of a mentality is in these two teams. When I talk about these two teams, I talk about mentality monsters.
like unfortunately Chelsea is not in that particular zone right now. ठीक है, unfortunately Chelsea is not in that particular zone right now. We still need to improve in that particular zone. I think होगा with time. ठीक है, we are still, I will still call ourselves as European champions because we are. ठीक है, Definitely. we still call ourselves as European champions, but एक मिनट नहीं, let's not go there. अभी भी time है उसके लिए. Let me hit this one last point for this particular game. एक popular opinion यहाँ पे, I won't call it an unpopular opinion. एक popular opinion कि Edouard Mendy would have saved that shot. No यार, no यार, नहीं. Unpopular. आज काफी shots ऐसे थे बाबा जो भी कह रहे थे लाइव 95% स्ट्रीम पे, keeper बाबा भी wouldn't तो have कह रहे थे शायद. बाबा नहीं, said कि वो वो बहुत बीच में खड़ा था. You know what? यहाँ पे जब analysis हो रहा था मैच का, तो they were showing the footwork of क्या होना है, Kepa over there standing. Kepa was standing over there. Shot release हो रहा होता है जब, तो Kepa made a move on his right, and then he had his shot, his left foot ready कि यार वो उसको lunge करना होगा left hand side पे, but then फिर he shifts right and then makes a jump. मतलब I'm not saying कि positioning ठीक है, you cannot judge what would Mendy would have done over there, but given कि reach Mendy की ज़्यादा है, एक fingertips, because एक चीज हमें देखना होगा, that shot was a bullet of a shot. Even अगर हाथ भी लगता है, there's a high probability, and even एक ये भी reason है कि ball जो थी, that was good 2-3 feet inside the pole. Still if fingertips अगर होते हैं तो it's. But it's I'll explain to you what was in my opinion, because I'm a keeper as well. So okay. I was, if I put myself in that particular position, okay, I'm seeing and I'm telling you because I saw that he used Thiago Silva as a shield. Yeah. Okay, he used Thiago Silva as a shield. Okay, he used Thiago Silva as a shield, and almost, I'm not saying it is a proper curler, but if you put a small curl on that particular shot, put a small swerve on that particular shot, and using Thiago Silva as a shield. Now, when I'm looking at Kepa, and I'm looking at Kepa's vision, okay, Kepa's vision not completely blocked by Thiago, but he expects Thiago to cover that particular scene. All right, he probably expects Thiago to probably cover that particular side. So my mental state would be, okay, I think he's going to go here. I think he's going to fucking go here. So I'll just I'll just be ready for this. Okay. So even if he's going there, and even if Mendy was in his particular place, it's very easy to say कि because Mendy की height ज़्यादा है, so Mendy की lunging capacity ज़्यादा है, so वो कर लेगा save. But this point which I just talked about, in my opinion, this point and the point which you only took कि भाई pace, ठीक है, pace अगर हाथ भी लग गया, it's not like कि we are sure that हम लोग उसको tip करेंगे probably outside, ठीक है. हाँ, यही मेरा भी argument था, because people over there on the live stream were saying कि Mendy होता save कर लेता. I was like, okay, ठीक है, ठंड रखो. What I believe कि that shot deserved a goal, and even Mendy over there, because ठीक है, we can all argue about exactly, बहुत अच्छे तरीके से explain किया यहाँ पे, the perspective of the goalkeeper. That shot was nestling in the back of the net. Even Mendy were there. Yeah, exactly. मैं तो ऐसा, मेरे को तो लगा कि like अगर मैं कीपर हूँ और मैं देख रहा हूँ मेरे डिफेंडर्स ऐसे पोजीशनड है, तो आई एक्सपेक्ट कि अटैकर जाएगा ही फॉर अ कर्ल, लाइक मतलब. And that wasn't a curl. मुझे लगता है कि laces put किए थे उसने पूरे laces मारे थे Kevin. हल्का सा that was just हल्का सा swap था. That's what हल्का swap था. हाँ. और जहाँ तक वो फुट एक दूसरी साइड प्लांट कर नहीं पाते, वो तो I have seen a lot of keepers nowadays use that technique, like instead of just momentum build करने के लिए, तो instead of just एक standing start से jump के लिए की बजाय वो क्या करते हैं, पहले दूसरी साइड hop करते हैं और then momentum. One of the very reasons जब भी कोई अच्छा शूटर होता है वो शॉट लेता है, he अपने स्पीड थोड़ी कम करता है before taking a shot, and then take a shot on his speed. तो ये momentum building वाली बात है, and keeper do that very often. Absolutely. Kepa को क्या ही बोलोगे, ग्रीलिश वाला तो बचा ही. But Kepa made one or two good saves as well. मतलब nobody would blame Kepa after this game. Blame Kepa for that. Yeah. Save, keep off. He did his job well. Did his job well. And also talking about goalkeeper, एक और goalkeeper instance हुआ था वहाँ पे, where I found the brilliance of Ederson, because काफी underrated player होता है, because जब भी City की बात होती है, we talk about the best players, Bernardo, Kevin De Bruyne, ठीक है, Sterling and everyone, but Ederson again making that save, और जो what I observed कि he was very far off his line, and Lukaku के पास जब वहाँ पे बॉल मिली ना, मेरा ये ओपिनियन था कि अगर एडरसन काफी पीछे होता,
Lukaku के पास he would have got plenty of area to shoot because वहां पे when the player is near you it is very hard to put it around, ठीक है, गोल में डालना तो बहुत ज्यादा स्वर्व चाहिए आपको, but when he is back then you can shoot it directly. तो जैसे वो मूव बनने लगा, हाइलाइट्स में दोबारा से अच्छे से देखने पे आपको दिखेगा कि जैसे वो मूव बनने लगा, जैसे पास केम थ्रू, आई थिंक कोवाचिक ने ही वो पास डाला था शायद, एज मच एज आई कैन रिमेंबर लुकाकू को। यस, कोवाचिक ने डाला था। तो तभी जैसे कोवाचिक के पास बॉल आती है, ही इज स्टार्टिंग टू रिलीज दैट बॉल, आपने देखा एडवर्ड मेंडी में क्यों कह रहा हूं, एडरसन लीविंग हिज स्पॉट एंड कमिंग क्लोज, एंड जब वो क्लोज आता है एंड वो जो शॉट मारा लुकाकू ने, दैट वाज डेफिनेट गोल मेरे हिसाब से, इट वाज गोइंग बैक इनटू द गोल, बट रिएक्शनरी सेव था वो, इतने क्लोज एंड शॉट में भी पावर एंड जस्ट टेक हैंड, एंड व्हाट अ एडिसन ये चीज में हमेशा रहा है, मतलब वो यूजुअली ऐसे जो स्ट्राइकर्स होते हैं उनका मतलब कंसिडरेबल जो एरिया होता है जिसमें वो शूट करता है वो बड़ा कर देता है, एग्जैक्टली, ताकि वो शॉट इजीली रोक सके। बट उसका ये नेगेटिव पॉइंट भी, ही इज नॉट गुड इन दीस टाइप ऑफ सिचुएशंस। अगर सपोज उसके पास बॉल है पैर पे और कोई उसको प्रेस करता है और काफी कम डिस्टेंस है उसके बीच में, तो उस टाइम पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन काफी शिट हो जाता है, तो वो उसका नेगेटिव भी है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत फैंटास्टिक रहता है, इवन आज के गेम में आपने देखा, ही वाज वेरी ही हैज अ गुड रेंज, इजीली एबल टू फाइंड द एक राइट बैक को उसने दिया था भाई, सकता स्ट्राइकर इन एंड देन चिप किया था राइट बैक को, मैंने बोला भाई साहब आउटफील्ड प्लेयर ब्रो, प्रॉपर आउटफील्ड, एग्जैक्टली ये मेरा वर्ड था, एडिसन इज प्लेइंग लाइक एन आउटफील्ड प्लेयर, एग्जैक्टली दिस वाज माय वर्ड। हां, but he is having a like a very subpar season इस बार, like उसका पोस्ट शॉट एक्सजी काफी बेकार है, stats wise some of the worst in European football भाई, ओ ब्लैक और इतना बेकार है उसका लुक। तो वो तो है अभी काफी सरप्राइजिंग लिस्ट है, अगर ऐसे पोस्ट शॉट एक्सजी का अगर फर्स्ट की लिस्ट निकालोगे तो काफी टॉप कोर्स। हां, इस बार तो बहुत सरप्राइजिंग लिस्ट है। जो ससा, पता नहीं क्या हुआ है ब्रूनो लाच, ठीक। हाँ, इस बार जोसे सा, डेविड डेया, ये सब बढ़िया कर रहे हैं, ये प्रॉपर राइज कर रहे हैं अभी। मैनुअल नोयर, एडरसन, टर स्टेगन, ओब्लैक ने आज तक जिंदगी में कभी नहीं किया। कोर्टवा तो अच्छा कर रहा है, बोनो भी बेकार कर रहे हैं इस बार, क्रेजी। टर स्टेगन की बात मत करो, रोना चाहता है, बट आई जस्ट होप यार बंदा बेचारा बंदा रेडी तो हो जाए यार, कर तो ले यार, होप है यार, मतलब वही होप है ना यार शिखर भाई, जैसे डेहिया इंप्रूव कर सकता है तो क्यों नहीं यार, अपना ही बंदा है, उसको भी चांस दो, 2 साल तक उसने नहीं खेला वैसा। डेहिया का तो बहुत डिफरेंट सीन है यार, डेहिया तो, टर स्टेगन तो 3 साल से पता है कि टर स्टेगन ठीक है, ही इज डाउन बैड, डेहिया तो फ्लैशेस में आता है यार, 5 में ऐसे खेलेगा एंड feel like okay the best goalkeeper is back and वापस he is back to his old self, तो इसका तो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएटिंग सीन है, बट हाँ ठीक है भाई, डेया तो आई एम स्टिल नॉट सोल्ड, क्योंकि मेरे को लगता है बस जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स है फॉर अ गोलकीपर आर वेरी लाइक बहुत वाइड रेंज ऑफ स्किल्स जरूरी है। नहीं सही बोल रहा है, ही इज जस्ट अ शॉट प्रोसेस स्टॉपर क्लेम करना, गुड ऑन द बॉल और स्वीपिंग करना, वो ही इज जस्ट अ शॉट स्टॉपर, he's just doing so the even though he's basics having a good or the season, minimal long things term right, I don't think। अच्छा, मेरे एक एक मेरा पॉइंट था यहाँ पे which we were talking about लाइव स्ट्रीम पे भी मैं जब कर रहा था उस पे बात हो रही थी कि after this performance the saves of De Gea, the reaction of De Gea जो कि काफी considerable amount में improve हुए हैं, Lucho would consider De Gea ahead of Unai Simons, but then there was this argument in terms of distribution, no chance, in terms of playing out from the back, Unai Simon is very Luis good, Enrique तो बिल्कुल नहीं better, करेगा भाई, and Luis Enrique won't think about this, वो तो not भाई at all. एक ही पास चाहते हैं, literally dropped Sergio Ramos because he wanted 2 ball playing center backs, ball playing center backs, correct, and वो एरिक गार्सिया को खिलाता है वहां पे, एरिक गार्सिया को वो खिला लेगा and he won't play 19-year-old Eric Garcia played in Euros, come on, yeah, exactly. Pau Torres, this is not an Italian, this is not an Italian setup, man. You can't expect a player who is not good in good on the feet to be between the sticks. भाई इटालियन, अब ये देखो लाइक डोनारुमा द बेस्ट इटालियन गोलकीपर, हाँ, या फिर इनफैक्ट बेस्ट यंग गोलकीपर भी कह सकते हैं, बेस्ट यंग गोलकीपर, या करेक्ट, हाँ, ही इज आल्सो वेरी गुड एट क्लेमिंग क्रॉसेस एंड स्वीपिंग नाउ, अब तो पीएसजी में ही हैज to do a lot he's of learned sweeping that as well. he has learned that, correct, yeah. डेहा में वो नहीं दिखता भाई, डेहा तो भाई छोड़ देते सेंटर बैक्स को अकेला, भाई मैं अपने यहीं पे सोफा ओफा डाल के यहीं रुकूंगा, कभी भी पीछे आता है ना डेहा के पास, मोस्टली जब भी डेहा के पास पीछे आता है ना, and when there's pressure on डेहा, he doesn't leave his line, he doesn't leave his line, it is so irritating to see, bro. even जब crosses आते हैं, जो भी आज ही एक चांस आया था जहां पे हेडर पड़ता है and Deha was over there making a reactionary save
because he's there. Ball की trajectory was just around him, उसके vicinity में थी, and he made that save. But that's also you need to do something. We have seen goalkeeper concede those goals as well. The first मतलब you cannot take priority goalkeeper ये goal बचाना ही होती है. Exactly. तो कहीं ना कहीं ये तो होना ही चाहिए. But my point being goalkeepers are quite different. बहुत ज़्यादा but my point being is, if you want to build from the back with De Gea behind, right? You 100%, almost not 100%, 70% of the time you will say that De Gea will punt the ball. Okay, 70% of the time De Gea will punt the ball. Okay, he'll not look for. He'll not look for a ये जैसे आज एडरसन किया. Ederson does this on a regular basis. But what Ederson does कि भाई वो width of the pitch utilize करता है with his ball distribution. De Gea भाई बहुत मतलब देखा ही नहीं है recently. Proper definition of a no nonsense goalkeeper. De Gea. Yeah, he's like that. Correct. He's like that. Pure Premier League style goalkeeper. अब तो भाई प्रीमियर लीग में भाई नहीं प्रीमियर लीग इज अब तो प्रीमियर लीग प्रोड्यूसिंग गुड कीपर्स भाई. रामसडेल वगैरह दीस आर. और इसको बदलते हैं अपने पेप गार्डियोला, बिकॉज लिटरली अगर देखो तो जो एक लीग में एक रेवोल्यूशन लाना होता है, मतलब पिछले कुछ दिन से मैं कुछ ज्यादा ही अप्रिशिएट कर रहा हूँ सिटी को. मैं इतना कोई ऐसे बड़ा फैन नहीं रहा हूँ, मैं यूनाइटेड की जर्सी पहन के घूम रहा हूँ. बट द थिंग इज कि मतलब यू हैव टू अप्रिशिएट व्हेन यू सी ब्यूटी. It is यार, it is. You just cannot ignore Pep Guardiola in the Premier League. वो तो आई गेस मैं कुछ टाइम पहले बाबा से बात कर रहा था, और बाबा प्रीमियर लीग पता नहीं कितने सालों से देख रहे हैं. आदिदेव भैया भी कितने सालों से देख रहे हैं प्रीमियर लीग. इन लोगों ने तो सामने देखा क्या चेंज हो गया एटमॉस्फेयर में प्रीमियर लीग. सही में भाई, सही में. पेप के आने के बाद क्या ही चेंज हो गया भाई. ये क्या हो गया. Chelsea भी they were one of those teams मतलब proper वो hoop ball, long ball, route one football थी proper एकदम. मैकेलेले तक they used to employ, but अब देखो कितना चेंज आ गया भाई इंग्लैंड के फुटबॉल में. So the thing is evolution. Players like Declan Rice, players like Foden tell us कि technicality is seeping into this England Premier League as well. And you see Jadon Sancho who want to be even products, English products, Jude Bellingham. भाई simple चीज है यार, simple चीज. Ben White. Did we ever think of a system 4-4-2 with 2 false nines? ठीक है, 4-4-2 with 2 false nines. Never. ठीक है, this Pep Guardiola, ठीक है, इस सीजन में वो भी लेके आ गया. Taking the piss mate. वो भी लेके आ गया next level. कोई भी प्लेयर को कहीं भी खिला रहा है, मतलब इन द टोटल फुटबॉल जो आप देख रहे हो, मतलब इट्स हार्ड टू फाइंड आउट इज दैट अ 4-3-3, इज दैट अ 4-2-2, मतलब 4-4-2 क्या है, मतलब बिकॉज़ यू सी सो फ्लूइड मूवमेंट इन द प्लेयर्स अप टॉप. केविन डी ब्रूने है, बर्नार्डो सिल्वा भी चढ़ जाएगा, फोर्डन आ जाएगा. इतनी परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग, एंड दैट इज व्हाट यू गेट विद मल्टीपल प्रैक्टिस. एंड पेप भाई लीग दे दो उसमें. The thing is, Pep is one of the pioneers of the rule कि formation is just a number. Exactly. Rules are the thing. इसी का इस्तेमाल करते हुए एक नई प्रोडिजी, एक नया मैनेजर, एक नई टीम में आके हम लोग को वही बिलीव दे रहा है. एंड वी आर स्टार्टिंग टू बिलीव कि शायद बार्सिलोना कर पाए अंडर जावी, बिकॉज़ दीस आर द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ जावी के फॉर्मेशन बस नंबर्स है ऑन द पिच. कम ऑन. अरे भाई मैं बताता हूँ. चावी says these things, पर चावी करते हैं फिर जाके लूक डियोंग को खिलाता है. He can be like वो मैं बनना है और एकेडमी से कोई 15 साल का बच्चा उठा के फॉल्स नाइन उठाऊंगा, बट he comes नहीं, I want a बिल्कुल एकदम. What other option does he have? हर बॉल पे फेंक. What option की बात नहीं है. He plays him because he wants a number 9. He doesn't, मतलब the thing I like about Xavi is कि he doesn't want to fit in कि अच्छा भाई मासिया, बारसा, फॉल्स 9, ये बस छोटे छोटे टिंगे पिंगे खिला के और वो कराने. He doesn't believe in this. उसका जो है उसने सोच रखा है. एंड मेम्फिस मे बी अ बेटर प्लेयर, बट ही इज प्लेइंग लूक डियोंग क्योंकि ही फिट्स. दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट. और उसके वर्ड्स हैं तो कि चाहे वो द बोल गाय सकता है कि स्कोरिंग, पेप वेप पर तो वो उसको खिलाएगा, ही वोंट बेंच हिम. बट फरहान के आने से चीजें कॉम्प्लिकेट कर दी ना पे डेम्बेले ने. डेम्बेले के ऊपर काफी प्लान बेस्ड है जावी के. ही थिंक्स ऑफ हिम एज अ राइट विंगर जो वो विथ देगा, जो अभी हम स्टर्लिंग को देखते हैं करते हुए, जो वो अपने अल साथ की टीम पे अपने प्लेयर्स से करवाता था. एंड यही चीज कॉम्प्लिकेट कर रहा है डेम्बेले. अगर डेम्बेले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले, वी कुड एक्सपेक्ट टू सी दैट सेम थिंग जो पेप कर रहा है सिटी पे, विद फरहान एज अ फॉल्स नंबर 9, डेम्बेले राइट पे, आंसू फाटी ऑन द लेफ्ट. एक प्रॉपर फ्लूइड मूवमेंट, बिकॉज़ फाटी कैन आल्सो ड्रिफ्ट इन ऑन द सेंट्रल रोल.
स्विच कहीं ना कहीं ये चीज वो कर भी रहे थे, कहीं ना कहीं ये चीज वो करते कर भी भी हैं। रहे थे। हाँ, अंशु आपने फाटी देखा और होगा डेम्बेले। शिखर भाई कि याद करो जब फाटी और डिपाई एक साथ खेल रहे थे, इट वाज वेरी हार्ड टू फिगर इट आउट हु वाज बहुत एक्चुअली प्लेइंग ऑन दैट रोल्स, बिकॉज इंटरचेंज हो रहा था। एक गोल मुझे कहीं याद है ना जो, कहीं ऐसा भी हो रहा था हाँ उसमें, ऐसा हाँ ऑब्वियसली रोल्स स्विच हो रहे थे लेफ्ट विंग और सेंटर फॉरवर्ड के टाइम पे, पर ऐसा भी हो रहा था डिपाई यूज्ड टू डू द बॉल होल्डिंग वर्क या एंड ही यूज्ड टू, मतलब समझ रहे, एक तरह का ले ऑफ क्रिएट करना फॉर फाती, जैसे मतलब सोरेस उसके करता लिए था, एग्जैक्टली कहीं ना कहीं थोड़ा उसके लिए स्पेस बनाना, बट डिपाई उसके लिए शिट इन डूइंग इजी दैट। इजी करना। Depay हम्म shit in doing that. Depay cannot hold up. वो he cannot play with his back against the defenders and hold up करके खेलना, Would you because sell Memphis? yeah, I would sell. मतलब if I have a better option lining up right now, Fati becoming fit, considering we would sign a 9 and considering Fati would playing on the left hand side, I would sell Depay because हमने उसको I mean who are लाया you because he was basically, free, मतलब available, he was there. Do you think कि अगर हम्म अगर Memphis Depay 35-40 million में मिल रहा होता, Barca would have gone for Depay? I mean he's a quality player, no doubt about He that, is. But would they have definitely. gone? And Last season he had some of the best end product in crazy season, Europe. it was a crazy 47 season. goals मतलब and assists. I would have gone for, if I was a club, a top tier club, I would have gone for Depay definitely. Thing is he hasn't fit in अभी, and काफी छोटा सैंपल स्पेस के, टाइम भी बहुत कम है उसका, मतलब अभी तक आया कितना 6 महीने हुए होंगे उसका आए हुए। गलत होगा जज करना मेरे अकॉर्डिंग, शिखर भाई, यही चीज मैं टेस्ट के लिए भी बोलूंगा। हाँ तो डिपाई और फाती का यही है कि मतलब फ्लूइडिटी की जो हम बात कर रहे हैं, ये तो ऑब्वियसली हमारे फुटबॉल में शुरुआत से रहा। इवन मेसी, सुआरेज, नेमार, इनके भी फ्लूइड ही था पूरा फ्रंट। यू कांट से कि मेसी राइट विंग था, सुआरेज yeah. सेंटर फॉरवर्ड था, ठीक है। इट्स ऑल द मैटर ऑफ रूल्स, ये तो बात है। दूसरा ये कि डिपाई और फाती, मतलब जैसा आप बोल रहे हो कि डिपाई को आप बेच दोगे क्या, और 35 मिलियन 40 मिलियन में खरीदते क्या सीजन के स्टार्ट में, अगर वो फ्री एजेंट ना होता, मैं होता तो डेफिनेटली मैं खरीदता डिपाई को फॉर 35 मिलियन एंड फॉर द सीजन ही हैज हैड। केवल प्रीवियस सीजन, इससे पहले वाले सीजन, प्रीवियस सीजन तो ऑब्वियसली उसका इन टर्म्स ऑफ हिज एक्स नंबर्स एंड उसके असिस्ट नंबर्स काफी बेटर था, लेकिन उससे पहले भी ही वाज रैकिंग अप नंबर्स देयर। सो वैसे ही इवन वाज लिटरली इभी अ के मार्केट बारसा की टीम अपॉर्चुनिटी। में भी द मोस्ट एक्सजीज एंड द मोस्ट एक्सएज जो हैं वो डिपाई के पास ही हैं, मोर देन द होल बारसा टीम। इवन जो क्लासिको हुआ था, क्लासिको में जब इंट्रोड्यूस हुआ था, ही मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बॉक्स में पेनिट्रेशन करने वाली बॉल्स, इट वाज डिपाई आफ्टर पेड्री उस टाइम पे। तो मेरे ख्याल से ही इज अ हेल क्रिएटिव प्लेयर, बट इट्स बस यही बात है ना यार, मतलब जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पे काफी टॉक्सिक टर्वी स्टार्ट थी हमारी सीजन की, He बिकॉज doesn't रोनाल्ड fit with कोमन Xavi. I think कि problem ये है कि कहीं ना कहीं Xavi doesn't या want him, या एग्जैक्टली। फिर Xavi को प्रोफाइल पसंद नहीं, या फिर Xavi की टीम में उस प्रोफाइल की जगह नहीं। But व्हाट्स I द think कि प्रॉब्लम Xavi, विनायक? बॉल होगा। हाँ बॉल होगा भाई, उसे चाहिए लास्ट मैन। मतलब what Xavi wants from his 9 is शोल्डर पे खेले सेंटर बैक्स के, रन्स आए कॉन्स्टेंटली। उस मतलब जो एक आजकल के मॉडर्न नंबर 9, या फिर जो ये आजकल बंदे आ रहे जो लास्ट लाइन को इतना एंगेज करते हैं, उस टाइप, दैट्स व्हाट Xavi expects। क्या Xavi और मतलब like Depay को let's say in an ideal world, let's say not an ideal, that won't be ideal, let's say in a hypothetical world we had Benzema, would Xavi love to have Benzema? Because what Benzema does for Real Madrid, I think that is absolutely what Barcelona need right now. Benzema does everything, the thing is Benzema does भाई बेंजेमा भाई अजीब कंपैरिजन है, क्योंकि बेंजेमा इज हाँ he's लाइक वन everything। ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द Yeah, वर्ल्ड, तो मतलब you व्हाई can वोंट find यू? किसी एक मैच में you can find Benzema को flanks पे help करते हुए, yeah. you can find him pinging balls inside the box, and you can find him in the box having a You good can shot, find it मतलब in the he's midfield as well, You can in the find midfield as well, snatching exactly. balls from collecting balls। Busquets. El Clasico. what a rare elephant from Busquets। यार Yeah. नहीं यार, What a पता rare। है शिखर, रेयर लेटली ठीक है, गेटिंग पिक पॉकेटेड इज रेयर, बट दिस लेवल्स ऑफ बुस्केट्स, do you think that is rare? Because we have seen Busquets in and out, but under Xavi we thought Busquets would be खेल रहा है बंदा regularly Xavi के अंदर, he has been the most मतलब he is player as well. definitely improving, But काफी अच्छा ट्रांजिशन है उसका। what do you think about this whole Busquets bench scenario? आपका opinion क्या है about this? I'm definitely in alignation with the fact that you should gradually phase out Busquets now out of the lineup. But thing is, there aren't many players like Busquets. You don't have any player who can ideally replace him in the team. Number 6 जो बहुत लोग बात करते हैं कि फ्रैंकी डियोंग को नंबर 6 खिलाओ, he's bought for that. No, not at all. Not at, मतलब he was bought for being a midfield reinforcer, but he was not bought for
replacing Busquets. He can't play that role. जब फ्रेंकी खरीदा गया था, we never thought कि फ्रेंकी would be subbing off Busquets, because although उस position पे फ्रेंकी खेलते थे, but when he came on and we started to play, he fit right against Busquets and we instantly saw a very good combination. Definitely, chemistry. The same chemistry you will find between Busquets and Nico. Bhai, we'll play worse with Frankie in the place of Busquets right now. Definitely, we'll play worse. Definitely. I can say कि अगर even Pedri can play better than Frankie at that position. Number 6. Who do you think right now? अगर हम बस अब जैसे we talk about this whole phasing out thing, हमने phase out किया Iniesta को, हमने phase out किया Xavi को. Definitely. How are we planning to phase out Busquets? Because जैसे विनायक भी कह रहे हैं, जैसे आप भी बोल रहे हो यहाँ पे, we don't have got a very natural replacement. Like even though we would love to have a player like, I would love to have a player like Sandro Tonali. मुझे काफी पसंद है. I feel him be there and hold his own over there. He's perfect guy. But since we cannot get him, definitely Milan won't let him leave. How do we see Barca tackling this whole situation of transition of Busquets? The thing about Busquets is people might not agree, but Busquets is literally a generational player. Absolutely agree. Who doesn't agree? Busquets is. Does anybody over here in the comments who's watching right now can say? जो नहीं कर रहा वो पागल है. In my opinion, कौन बोला, मतलब मुझे समझ में नहीं आया. Who can replace? मतलब आजकल बहुत hate चल रही है Busquets से, तो I'll be on the safe side. So okay. अभी जो मेरे according, I guess Vinayak भी मेरे से agree करेगा, but it would be Aurelien Tchouaméni. Yes. Good shout. I think Locatelli would have been like very good. Yeah, perfect, but you तो can play in a single pivot. और जितने इटालियन टीम्स यूवेंटस के लिए पता नहीं क्या माफिया बनती है वहां पे, लोन पे लेके पता नहीं क्या क्या. हाँ यार, प्यार तो बोलते 100 मिलियन दो. अरे और बारसा तो 100 मिलियन डील 2 साल का लोन, देन फिर आपको कंफर्म करना है 35 मिलियन में. 2 साल बाद 35 मिलियन की क्या वैल्यू होती है? मतलब आई डोंट नो कि भाईचारा कौन सा बन रहा होता, बट बहुत ही भाई आई डोंट नो, whenever a player who is playing in the Serie A, if they कोई ऐसा ट्रांसफर रूमर बनता है, उनके दिमाग में पता नहीं यूवेंटस ही एक क्लब आता है कि मुझे यूवेंटस जाना है. 70% of the players want to same Bundesliga. मतलब यूवेंटस भाई एटलीस्ट यार Bundesliga में Bayern is like currently doing well. Currently क्या Bayern is Bayern, ठीक है. Juventus is not like Juventus in Serie A currently, ठीक है. तो it's not like कि फिर भी लोग जाना चाहेंगे Juventus, because भाई Juventus मेरा सपना था. Juventus is वो जो I'm not trying to demean Barcelona in any manner here, but it's again I'm saying कि Barcelona are not like the Barcelona of Xavi, Iniesta वाले years right now. Okay, they are in a transition state. एक बात ये है ना, जिस हिसाब से बार्सा ने ना पोस्ट जावी एरा प्लान किया ना, like I don't know if they actually planned or it was just happening, this things over there. Rakitic incoming over there, Xavi के साथ खेलना, Fabregas एक point of time पे. I think we didn't plan in the same way for Busquets. We did wrong over there. मतलब obviously because if अगर फ्रेंकी नहीं था वो रिप्लेसमेंट, we should have actually gone on and thought यार who is the replacement? Oriol Busquets है क्या? हम निको को खिलाना चाह रहे हैं, और we are wanting to kill one of our players. As a neutral, as 2016, you think that there have been brains functioning behind this club, then you're definitely wrong. Exactly. तब तो कुछ और they haven't capitalized on academy, तो फिर किस पे वर्क करें? दिस वाज आवर, मतलब समझो मेन मोटो था हमारे क्लब का, एकेडमी पे फोकस करना. उस पे वर्क नहीं किया तो फिर क्या ही बात है. जैसे अभी हमारे टीम की बात करूं तो आप जैंड्रो ओरेलानो को जानते हैं. या जैंड्रो ओरेलानो, ही इज एबल, मैं नहीं कहूंगा रिप्लेसमेंट, बट ही प्लेज लाइक बुस्केट्स. या लेकिन उस पे किसने कैपिटलाइज? प्रोफाइल सेम है. हां, 2017 से आई गेस वो एकेडमी में बी टीम में खेल रहा है जुवेनाइल से आके, बट उस पे किसने कैपिटलाइज नहीं किया? पूज इज अबाउट टू लीव, पोयाडो इज ऑलरेडी लेफ्ट, अलेने वगैरह सब बाहर ही है अभी. हमारे जितने भी उस टाइम पे सॉर्ट ऑफ है ना अपकमिंग स्टार्स है, तो हमने कैपिटलाइज करा ही नहीं हमारे उस स्टार पे. तो प्लानिंग कैसे होगी? और अच्छा मेरे हमने कुटिन्यो को गो अहेड कुटिन्यो. नहीं, इट्स ओके. मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा था. हाँ बिल्कुल सही पॉइंट है. इसी थॉट पे मैं एक क्वेश्चन बिल्ड करूंगा, बट उससे पहले आई जस्ट वांट टू गो टू आदिदेव भाई. आप कैसे एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से, आई वांट टू हियर दैट. So neutral perspective से I was talking about that Juventus वाला point कि that Juventus का pull जो है in Serie A and stuff, and neutral perspective से भी अगर मैं बोलूँ, when I'm looking at Spanish players who are also playing abroad, ठीक है, I'm talking about why I'm talking about Spanish players. I'm taking case in point 2 players, Gus here, Ferran Torres.
ठीक है, Eric Garcia and Ferran Torres. Okay, both of them have talked about the fact they were playing for a successful club only, Manchester City. It's not like कि भाई when Ferran Torres left, I was a little bit surprised, more surprised than Eric Garcia. ठीक है, because Ferran Torres was getting a project in Manchester City where he was not the pivotal figure, to be honest, but he was still in form. ठीक है, it's not like he was going to Pep be liked him a lot. he was going to be an absolute rotational player, because everybody, trust me, everybody is a rotational player in Manchester City. And you know what, Adidev bhai, jab Ferran came in, we all started to question about the game time of Sterling, and same happened when Jack Grealish came on. Exactly. So that's why I'm saying कि when these players are talking about कि okay, we want to move to a club like Barcelona, we want to move to Barcelona. Okay, I'm in my head, I'm thinking as a neutral fan, but the project that you're getting in Manchester City is currently a much more successful project. Barcelona is a transitional club currently. ठीक है, but you want to go to a transitional club. But you want to go to a transitional club. How does that make sense? But that is exactly why I'm parallelly comparing it to Juventus. ठीक है, I'm parallelly comparing it to Juventus. But to be fair, यहाँ पे तो बेल्जियन प्लेयर्स भी बार्सिलोना ही आना चाहते हैं. हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ बेल्जियन प्लेयर्स भी, मैं स्पेनिश प्लेयर्स का मैं केस इन पॉइंट बोल रहा था. ठीक है, मैं केस इन पॉइंट बोल रहा था. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बेल्जियन प्लेयर्स एज वेल, all of them has this theory in their head ना, they're going to a club, मेस्कुए उन क्लब जो तुम अभी भी बोलते हो. ठीक है, बार्सिलोना का मेस्कुए उन क्लब जो बोलते हो. I believed in that particular philosophy. If you look behind me, मेसी का पोस्टर भी है पीछे. ठीक है, ठीक है, और ये दोनों जो बैठे हैं मुझे क्लोजेट बार्सा फैंस भी बोलते हैं. ठीक है, ठीक है, I believed in that philosophy for a long period of time. Recently everybody knows what is happening. ठीक है, so when you're going to a club in that current state, ठीक है, it's inexplicable for a neutral fan. ठीक है, it's kind of inexplicable for a neutral fan, and I only think in my head कि भाई तुम इसलिए जा रहे हो because you consider that club in a historical sense, कि मतलब तुम वैसे club में जा रहे हो in a prestigious. Can't we say this कि Ferran obviously over there, we never thought of him as a starter, but Ferran thought as a starter of himself at Barcelona. True. Because Xavi might have gone on with that same strategy. Absolutely. I'm not denying that. Exactly. That is the pull. And even Locatelli knew he's stepping on from Sassuolo to Juventus. He knew he would be playing over there, and he's playing right now over there. But Locatelli had other offers on the table as well. Arsenal, that's my point. Arsenal काफी ज़्यादा interested थी. हाँ, Arsenal बहुत सारे क्लब्स होंगे. बहुत सारे क्लब्स इंटरेस्टेड भाई Locatelli. बहुत सारे क्लब्स थे इंटरेस्टेड Locatelli पे. Locatelli chose Juve, which is still not, I will not say they are currently title contenders. I will not say that. You're going to a club in that zone, and that's why I took Barcelona's name in this aspect, not just एक बार. हाँ, बोलो सर. हाँ, नहीं, मैं मेरा पॉइंट वही था, समराइजिंग इट ऑल. मेरा पॉइंट वही था. है कौन और मार्केट में टू रिप्लेस बुस्केट्स? Who do you think is another profile Barca? या तो ये let's take a look at that. Let's take Kamara, Zakaria, ये सब मुश्किल लगता है मुझे. Xavi would go unless he's going in a back three, तो वो मिड में दो आ जाएंगे. But नहीं, बुस्केट्स का रिप्लेसमेंट मिलना बहुत टफ है अभी. Declan Rice, Calvin Phillips, Tchouaméni, Rodri, Fernandinho, मतलब थोड़े से सिमिलर. अगर प्रोफाइल्स के प्लेयर्स अगर देखो, Rodri I think स्पेन में भी, because Rodri plays like that. Rodri is the closest. And even ये बात पेप ने ही बोली थी शायद कि we found a perfect replacement of Busquets. Rodri well scouted था पेप का. पेप अगर आप नोटिस करोगे ना, तो पेप की अगर आप टीम देखोगे, उसमें आप पेप की जो पुरानी टीम थी बार्सा वाली 2009. वैसे शिखर भाई, to be fair, Rodri was one of the best midfielders in Spain, एटलेटी में जब वो खेल रहा था. तो वो तो स्काउटेड गया. वो भी वैसी टीम थी कि बहुत लोग पीछे थे कि रॉड्री लेना है. वो भी वैसी सिचुएशन थी. और look at that selection of Rodri. But यहाँ पे again coming back to that Adidev bhai's point, because बहुत सही बातें बोली थी, that you see the pull of Pep. Rodri कहीं ना कहीं he thought कि he is kind of a misfit over there at Atletico Madrid, and he, although having a lot of offers, he went to a team that kind of replicates the style which he likes to play, and he's fit like a jigsaw puzzle over there. आया and बैठ गया, थोड़ा सा adjustment लगा, but he's there and he's not gonna leave. ये तो प्रीमियर लीग में तो बारिंग कुछ क्लब्स मेरे ख्याल से गेम स्टाइल का पुल या फिर जो मैनेजर पुल है, यही वर्क करेगा. क्लब्स लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड और
यू नो लिवरपूल, आई गेस ये जो क्लब्स हैं इनके लिए नाम काफी है, लेकिन बाकी जो क्लब्स रहेंगे उनको का कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बताना. एग्जैक्टली. आई थिंक एक जॉर्जिनो ऑप्शन है, बट जॉर्जिनो आई डोंट थिंक विल मूव, बट एज ही इज वाली बात, समबडी वो हु काफी बड़ा एज वैसे टैक्स. सबसे replicate कर प्रैक्टिकल सकता ऑप्शन क्या है? प्रैक्टिकल लाइक दैट कैन हैपन लाइक इन द नेक्स्ट सीजन. कमाल. प्रैक्टिकल ऑप्शन वुड बी चेंजिंग स्टाइल मे बी. हाँ, मेरे को भी चेंजिंग डबल पिवट या कुछ मेरे ऐसा ख्याल से, चेंज क्योंकि लाइक अब ये जो सिंगल पिवट वाली जो नंबर 6 जो एंकरमैन वाली बात है, बड़ी पहली बात तो वो मुश्किल है. ब्रीड ही रेयर हो गई है. दूसरी और बात चुआमेनी भी भाई कितना 70 मिलियन लाइक उसकी आराम से. बहुत सपोज्ड महंगा कॉस्ट इतनी ज्यादा है. हाँ. डिक्लन राइस तो वो भूल भी बड़ा जाओ. मुश्किल है. डिक्लन राइस तो एस्ट्रोनॉमिकल डेक्लन जाएगा वो राइस बंदा. इंग्लिश है, वैसे भी आई इंग्लिश है डोंट तो गया. थिंक कि वो तो नहीं आएगा, इंग्लिश तो हाँ. अपने हाँ. बात ही अलग. फिर आपके पास इंग्लिश वाले बचे थोड़े स्पेन से में नहीं डिफरेंट. चलते. एग्जैक्टली. थोड़े थोड़े से हाँ, आपके हाँ. पास इस प्रोफाइल से को हटा दो. आपके पास बचते हैं फिर थोड़े से डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफाइल ऑफ प्लेयर्स. डेनिस जकारिया, फ्रैंक केसी, कमारा, बिसूमा, कैसी भी नहीं जा एनडीडी. रहा, कैसी भी मतलब नहीं तो नहीं. जाएगा. हाँ ठीक इससे है. आप उसका डाई डाउन. हाँ, तो एनडीडी का भी, NDD is being touted by a lot of clubs. I'm thinking NDD Premier League ही choose करेगा. I'm not because of the fact कि I want him to stay in the Premier League. It's मुझे वो Premier League kind of a style वाला player कुछ ज्यादा ही लगता है. Okay. ठीक है, NDD. Because I feel what Busquets brings to the table, that body shift and linking up with other people around him, NDD is a little bit more of a destroyer than Busquets. Exactly. But coming back to the same point, is it the same profile we need now to change a philosophy? जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं ना कि थोड़ा स्टाइल चेंज कर सकते हैं, मे बी डबल पिवट जा सकते हैं. So because we are not able to find एक perfect replacement, जावी कहेगा ओके ठीक है, we're not able to get because wages बहुत ज्यादा है, सैलरी बहुत ज्यादा है. आई थिंक अगर हम स्टाइल एडजस्ट करते हैं, अगर हम डबल पिवट खेलना चाह रहे हैं ना, मतलब प्रॉपर एकदम जेल्ड अगर दो पिवट वाले, तो मेरे ख्याल से वी हैव द रिक्वायर्ड पर्सन. Yeah, we have the required. Who do you think? One guy, I think मेरे हिसाब से Nico Gonzalez in that role. Nico Gonzalez and Frankie could start. Pedri and Frankie could start. They have, they can build a partnership over there. क्या लगता है विनायक? मतलब if you look at Kimmich and No for me. Tolisso playing. मेरे लिए इसलिए नो है क्योंकि एक जो चीज बार्सा फैंस भूल जाते हैं कि इवन आउट ऑफ लाइक कितनी भी बुस्केट्स की कितनी डिफेंसिव शॉर्टकमिंग्स है, he has the best tackle success rate and he completes the most tackles in Barcelona at this moment as well. But we are basing this upon changing the style. नहीं, nobody, we are not asking them to do the job. But एक double pivot की requirement अलग हो जाती है एक single pivot से then. But I think कि जो double pivot इसलिए है कि फ्रेंकी को use as a progressor और दूसरा बंदा can put in a shift defensively, ball winning. Nico won't do it. Like Nico can do it, but he is not good at it. He's not a ball winning midfielder. Yeah, he's not. He's much more of a carrier. Balls, but he's interior, वो थोड़ा higher up the pitch, अपनी body use करना. Same I see Gavi. मतलब गावी काफी young है, but you see मतलब एक hint of ball winning आप गावी में still देखते हो. Gavi is a ball winning midfielder. बहुत अटैकिंग. मतलब वो सेंट्रल मिडफील्डर्स अभी सब मेरे न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से सेंट्रल मिडफील्डर्स का भी नाम लिया. लाइक probably if you want to have a double pivot, you would need a specialist ball winning midfielder. Yeah, you would need. Exactly. And De Jong is not that. Like Chelsea have Kante. Yeah. Jorginho and Kante इतनी perfect player है ना. Kimmich Goretzka again बहुत फाड़ है. तो you know one is a disruptor, एक ball winning player, and दूसरा can have De Jong would be there, बहुत फाड़ उस रोल में खेल सकता है. But then again you need one. ये क्या ये जावी नहीं सोचता होगा? मतलब कैसे रातों में सो पाता होगा बंदा? मैं तो ना सो पाऊं. मैं जावी में तो यही सोचते थक जाऊंगा बे. क्या मतलब मैं अगर बार्सा का कोच में ये सोच के सोच सकता हूँ कि हाँ मतलब मिडफील्ड में कहीं ना कहीं ऐसा आर्केटाइप क्रिएट हो जाएगा हमारे अकेडमी. और उधर ट्रांसफर रूमर्स आ रहे हैं, अल्वारो मोराटा, हालैंड. अरे अल्वारो मोराटा कितना लेकर उसके बारे में बात ही नहीं किया भाई. मैं बोला कि जो पोजीशन स्ट्रेंथन करनी है सबसे ज्यादा उधर देखो ना यार. मैं वही बोल रहा हूँ. लेफ्ट बैक के लिए बार्सा लिग्ड है, वो मुझे लगता है हाँ ठीक है यार, दैट दे कैन ट्राई स्टिल. राइट बैक से ज्यादा राइट बैक पे जा. एब्सोल्युटली. पीपल आर थिंकिंग डैनी आ गया, अब डन हो गया, हम सेट हो गया. भाई डैनी क्या खेलेगा, कितना खेलेगा डैनी, कितना. थैंक यू. बार्सिलोना डेफिनेटली लेगी, वो तो बार्सिलोना डेफिनेटली लेगी. अभी क्या बात कर रहे हो? ओ भाई साहब, इतना आयर लिया है ना भाई, इतना आयर लिया. मैंने बोला भाई डैनी एल्वेस को तो कितना खिलाओगे भाई, मतलब एज देख लो भाई, ओवरवर्क कराओगे भाई तुम उसको इस एज में. क्या पागल हो? He's definitely अभी फिट है, काफी गुड इन शेप. टू बी ऑनेस्ट, he's good in shape for 39 years.
he's great, we can't but over realistic European level थोड़ा सा target यार. करना है. जैसे आप गावी पे एक 17 साल के प्लेयर पे इतना ओवर डिपेंडेंस नहीं हो सकते, एक 18 साल के पेडरी पे इतना ज्यादा ओवर डिपेंडेंस नहीं हो सकते, वैसे आप एक 38 इयर्स ओल्ड डानी एल्विस पे उतना ओवर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए. दैट्स माय व्यू. आपको अपनी टीम पे बैलेंस रखनी चाहिए. वेराइड है. हमारे स्क्वाड जो है ना उसमें जो कंपोजिशन है काफी वो है, एक्सट्रीम्स पे है. Exactly. या तो एकदम बुड्ढे हैं या फिर एकदम जो बिल्कुल मतलब दे हैव टू मतलब लीव तो नहीं कहूंगा बट हाँ ठीक है, ग्रेजुअली फेड आउट. और एक कुछ है जो अभी बडिंग है, दे हैव टू लर्न. मतलब इतना जनरेशनल गैप आ गया है वो 6 साल से. एग्जैक्टली ये पॉइंट जब शिखर तुमने बोलना स्टार्ट किया ना, मेरे दिमाग में एक बंदे का नाम हिट किया, एंड इस बंदे से हम बहुत ज्यादा लिंक्ड भी थे कुछ सालों पहले. रिमेंबर फैबियन रुइज? Yeah. He's a good player. Yeah. He's a good player. But I is he a won't take ball him at winning Barca. midfielder? He's good in winning balls. नापोली का गेम देखा है? अंगूसा ठीक है, he helps him. अंगूसा मतलब और ज्यादा डिसरप्टिव वे में एक्ट करता है, बट अगर यू नो कामनेस, पासिंग, कंपोजर, आपको ये चीजें चाहिए ना. कामनेस तो भाई अपने पे तो पेड्री निको ले आता वगैरह, है. you have a lot काफी of निको ले आता है. passing ability वगैरह, ये सब तो बहुत Pedri is probably the best under 20 passer in Europe easily. See, the thing is, जो नाम तूने पहले लिया ना जी भाई, जो आपने नाम सबसे पहले लिया था about Sandro Tonali. Sandro Tonali is the only currently, when I'm talking about and I'm thinking out loud, currently only perfect replacement for Busquets. आप यकीन नहीं करोगे, मैं फीफा खेलना स्टार्ट करता हूँ, द फर्स्ट साइनिंग दैट आई मेक व्हेन आई प्ले, आई परचेज सैंड्रो टोनाली. मुझे चाहिए ऐसा है, मैं लेके रख लूं इस बंदे को. एंड इट्स नॉट ओवर हियर. सैंड्रो टोनाली से पहले ब्रेसिया पे खेलता था, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हां ब्रेसिया. मैं बंदे का सिर्फ अकेले से मैं ट्यून इन करके मैच वो देखता था बस, भाई ये देख लूं मैं यार इसको. एंड नॉट ऑल, हर मैचेस नहीं, बट आई मेक श्योर कि यार मैं स्टार्टिंग केस का एक हाफ देख लूं, बिकॉज़ आई लव दैट गाय. ब्यूटीफुल प्लेयर. एंड थोड़ा सा वो कह सकता हूं, पर वो भी कैसी के साथ खेल लिमिट थोड़ा सा नीचे लाइक ही इज नॉट आल्सो एकदम वो एग्जैक्टली वो रोल नहीं कर रहा जो. बट आर वी थिंकिंग अगेन, कैन वी गो ऑन एंड से कि एक प्लेयर डोंट रिस्पेक्ट बुस्केट्स मैन. हाँ वही, तुम अगर रेप्लिका बुस्केट्स का एक्सपेक्ट करो, नहीं मिलेगा वो नहीं मिलेगा. भगवान ने उसको तराशा है ऐसे. रिस्पेक्ट बुस्केट्स भाई. वो द इजीएस्ट ऑप्शन. एंड दुनिया इस चीज में यकीन नहीं करेगी कि दिस इज वन प्रोफाइल ऑफ अ प्लेयर जिसको आप नहीं ढूंढ सकते so easily. You can get another disruptive midfielder, you can find a number of them, you can even find a Casemiro, you can go out and try. आप उसको disruptive profile में आपको near about मिल जाएगा. हाँ, Barrios is like a Casemiro kind of midfielder for me. I don't know when he'll play in Premier League. I have no clue भाई, पता नहीं कौन जाता नहीं है. Team should move on. I don't know why it doesn't come. Why nobody even bids. He's aging too. अभी 28, 29 का हो चुका है वो, मतलब this was the time. जैसे जेफरसन लर्मा था ना, याद है एक बार? जेफरसन लर्मा. हाँ. तो उसने मूव करा था, मेरे ख्याल से टाइम था बारिश का. लेट्स सी क्या होता है. जो मेरा एक क्वेश्चन था यहाँ पे, बहुत पहले मैंने सोच रखा था कि हु इज द वन प्लेयर जो कि ऐसा लगता है कि बार्सिलोना की यंगस्टर्स में भी या ला मासिया एंड ऑल में इंक्लूडेड कर लो, जो हमने सेल किया, shouldn't have sold, and इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल एंड क्रूशियल होते हैं, हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं इस जगह पे. कौन? कुकुरेया. Anyone अगर Brighton sells him, he'll be 30-40 million player easily. And a Champions League club will come to buy him. Barcelona left him for peanuts. So you are saying कि बार्सा ने इसके अलावा जितने सेल्स किए, let's say मुन्नेर, let's say क्रिस्टियन टेयो, मार्क मुनिएसा, and हमने चलो Thiago को भी इंक्लूड कर लो. अलीनिया कौन? Jorge Cuenca could also bite us in the back. He was वो है अपना सेंटर बैक था alongside Arau. He left. पर I think कुकुरेया तो like कुकुरेया तो सब जानते हैं like भाई वो. हाँ भाई अभी तो सब जानते हैं, हाउसहोल्ड नेम बन गया भाई वो तो. मेरे ख्याल से one of the best talents we have let off was Todibo, and rightly so. Todibo बहुत सही करा. Todibo, John Clare Todibo. हाँ. He's hell talented. मतलब on अगर he worked on the same trajectory, he's in that Saliba and you know Fofana tier list. But वो कहीं ना कहीं उसका attitude का issue है. अगर बार्सिलोना उस पे कैपिटलाइज करते, मेरे ख्याल से बहुत अच्छा टैलेंट हमारे पास to play alongside Arau. And when he came ना, you know, he got a game to play in that DM role. मैंने देखा था. And मैंने I was like pre-season में कोई एक गेम, हाँ एक गेम खेला, and I was like एक गेम दो गेम ऐसे खेलते, and I was like भाई okay, what are we trying to do over here? Are we finding a center back or are we going for Busquets replacement for the future? And you actually see him, he is very talented on ball.
ही इज गुड बॉल, मतलब बॉल पे बड़ा अच्छा है वो। एंड एक और दिमाग में मेरे नाम आ रहा है, लेट मी जस्ट से इट आउट लाउड, गुएंडूजी। Matteo Guendouzi, हाँ मतलब वो he's भी having a बॉक्स टू great, बॉक्स बहुत he's 8 having a good मॉडर्न season टाइप। for Marseille. He's having a wonderful season for वंडरफुल Marseille. सीजन, या बॉलिंग मतलब बॉलर बन रहा है प्रॉपर उधर। मतलब मैं उसके जितने थोड़े गेम्स मैंने देखे थे इस सीजन के, मतलब he's evolved into a career as well. ठीक है, he's evolved into a career as well. एंड ही यूज्ड टू विन द बॉल्स एज वेल। He's a natural ball winning midfielder, to be absolutely honest with you. When I was seeing him in Arsenal, he was box to box, जो विनायक ने बोला वो तो कर रहा था, but naturally he was a ball winning midfielder. ठीक है, so but right now he's more of a ball carrier for Marseille, and I think that is a thing that he has brought into his periphery. I think it would be a good thing if he, I don't know, Barcelona fans को आप लोगों को ज्यादा पता होगा उसके बारे में, but I feel he will not move from France because that is I again. think पता है बात ये भी कहीं ना कहीं, जैसे अभी हम यंग मिडफील्डर्स की बात करें 17, 18, 19, 20, 21 साल के यंग मिडफील्डर्स की, मेरे ख्याल से इस एज तक तो दे डोंट इवन फाइंड देयर ओन नीश। या सही बात बोल रहे हो। बेसिकली एक्सप्लोरिंग, हम नहीं कह सकते गुएंडूजी कुड बी अ वेरी गुड बॉल विनर इन फ्यूचर, 27-28 साल की उम्र में, कुड बी अ वेरी गुड पिवट ऑप्शन, could be a very good attacking player, कुछ नहीं कर सकते, but they are just exploring, उनका भी exploring का time है। Nobody 17 साल के गाबियों को ये नहीं कह सकता कि यार ठीक है, he's starting as a CDM. सही में He's learning, भाई, he's a center midfielder, he wants to play in the middle and he's learning. एंड यही बात मैं भी इस वे में कहने वाला था कि अभी जो एक मिडफील्डर्स की जनरेशन जो आ रही है, अभी जो मिडफील्डर्स आ रही है, दे नॉट बेसिकली, इट्स नॉट अ वेरी फाइन लाइन कि आप एक बहुत इजीली तराश के कह दो कि नहीं ही इज दिस काइंड, यू नो। अब एक मिक्स ऑफ मिडफील्डर्स ना हु आर वांटिंग, द मॉडर्न रिक्वायरमेंट ऑफ द फुटबॉल हैज डेवलप्ड द मिडफील्डर स्पेशली टू हैव ऑल द ट्रेड्स, बिकॉज वी वांट द मिडफील्डर्स टू हैव बॉक्स टू बॉक्स वाला रोल भी, यू सी कि दे आर डेवलपिंग इनटू दैट रोल, दे वांट to have that physicality as well. Gavi, although he can attack, he can score, but he also likes to win the ball. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक एक पार्ट टच हो जा रहा है उनका अलग एक स्टाइल का भी। You cannot find a pure number 10, pure एक purity number 10 बहुत मुश्किल है। I can literally name players जो कि उस प्रोफाइल में फिल करते हैं, Florian Wirtz, Kai Havertz, one of them. But then again, अगर when I go and look at the young generation of midfielders, it's very easy for them कि maybe they are still looking at what is the best place that they can play. तो that is making it difficult for us to find a replacement, and मुझे अजीब लगता है। Easiest तो मैं कहूँगा कि बस find somebody जो कि defensive output वो कर सके, better दे, because अगर आप उसका archetype नहीं ढूंढ पा रहे, then find a person who can at least play that role. A defensive midfield role का prior role होना चाहिए to defend, and we should ideally do that. जैसे अगर हम Ter Stegen का replacement ढूंढेंगे, if you are not finding a very good able sweeper keeper, at least find someone who can save shots. Yeah. Jose Sa. Yeah. Iñaki Peña. Jose Sa भी, वो भी है। Dimitrievski, वो है जो वायोकानो का Dimitrievski, हाँ, वो भी अच्छा वो player, he's a good shot stopper. Even Ramsdale is one guy जो कि Ramsdale पता है मतलब he's a good shot stopper, but Ramsdale बिना he plays for the cameras. लगता है क्या, मतलब he makes things, मुझे कब sometimes ना simple saves को भी मतलब he plays for the cameras. ठीक, sometimes I'm not saying what's wrong in that if he does the job. It's not. You're saying he's a highlight player. No. I'm just saying. He's the best keeper in England. I'm just saying he's a beautiful keeper, but sometimes he plays for the cameras. That's what. Okay. It's not a bad thing, by the way. It's just an observation. It's just an observation. And he has really found his place in that Arsenal team. The way they have built up the goals right from the back. आप literally देखते हो कि उधर से Ramsdale पास करते हैं, उधर वहाँ पे finish कर रहा है, like I said. And एक बार नहीं ऐसा हुआ है, and that's very good. जिस synergy में वहाँ पे जुड़ चुके हैं, I don't see him leaving. अरे बोनमाउथ से आया भाई, लेनो को बिठा दिया भाई, मतलब कि कैसे भाई, मतलब तुम अगर जस्ट वैसे फेयर प्ले टू हिम, लेनो का भी बहुत खराब चल रहा था फॉर्म उस टाइम पे भाई। हाँ मतलब तो लेनो तो बायर लेवरक्यूसन का फॉर्मर कीपर था ना भाई, मैं वही सोच रहा हूँ, मैं वही कॉन्टेक्स्ट से बोल रहा हूँ कि बायर लेवरक्यूसन से आया कीपर, उसको हटा दिया भाई बोनमाउथ को कीपर ने। सो दैट इज लाइक इन ऑनेस्टली दैट्स अ ह्यूज। एंड आर्टेटा वाज वेरी एडमेंट कि नहीं मुझे चाहिए, Arteta was very adamant कि मुझे ये चाहिए बंदा। बेन वाइट के लिए भी एवरीवन दुनिया कह रही थी कि भाई कहां से 40-50 मिलियन यूरोस, टोमियासो को कहां उसने चांस ले आया। मैंने तो टोमियासो की सिर्फ न्यूज़ नाम कुछ नहीं सुना था, and he just comes in and plays.
Ben White का still भी you saw, but Tomiyasu was a very big surprise. I was like, look at my guy smiling. Yeah, biggest fan sitting, bro. Biggest fan of Arteta sitting here. Biggest fan of Arteta, भाई. Arteta proper Arsenal start. नहीं, seriously, I'm also a part Arsenal fan. मेरी Premier League में अगर कोई team है तो Arsenal is the one team that I look forward to. And oof, good talk. yeah. Great talk, man. Great talk. Probably let's end it over here because मुझे लगता है कि मतलब कंटिन्यू रखेंगे तो चलता रहेगा. अच्छी बात है कि Zoom पे they give us 40 minutes, so just keep on telling कि okay भाई देख टाइम हो रहा है तुम्हारा, वरना this can just go on. And भाई साहब काफी मजा आया यार, मजा आया काफी. थैंक यू सो मच विनायक भाई, थैंक यू सो मच शिखर भाई, थैंक यू सो मच आदिदेव भाई. इट्स अ प्लेजर टू टॉक टू यू गाइस. काफी interesting conversation. I hope जो लोग देख रहे हो लोगों को भी मजा आ रहा होगा यहाँ पे. So guys, do head into the description and check out the channels of these guys respectively. मैंने लिंक शेयर कर देनी है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में. So भाई लोग थैंक यू सो मच यार आने के लिए. हम फिर से करेंगे soon because हम साइड करना है next time very soon. एक कोई अच्छा पॉडकास्ट फिर से लाइन अप करेंगे यार. थैंक यू यार. गुड नाइट. काफी लेट हो रहा है, मुझे लगता है 3 बज रहे हैं क्या? 3 बज गए. अरे बाप 3 बज गए. चलो यार सोते हैं. ठीक है, कोई सीन नहीं. Good night guys. Good night. Thank you so much. Peace out. Thank you. Thanks man. Peace out. Better. जगा दो ब्रो, मेरा है फर्स्ट, मेरा वक्त, मेरा हक, मेरा सब, मेरा लक, मेरा जग, नाम तेरा याद रख ब्रो. जगा दो ब्रो, जो है ठस, जो है बन मोटा.